Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुमोशन क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इफ यू हैव टू गिवन दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis, we have to find distance between 2 points. Suppose if you take 0 1 2 3 4 and if you have to find the distance between 2 points, then how to find distance between 2 points? That is distance is your 2. If you assume that first is your x1, second is your x2, x1 x2 x1 x2 and we write this x2 minus x1. In that condition x2 is greater than x1. Value of x2 is greater than x1, x2 is greater than x1, then we get x2 का वैल्यू आपके पास कितना है 4. 4 minus 2 that is equals to 2. Means we have to find the distance between 2 points. We have to find the distance between 2 points, that is your x2 minus x1. In second condition, how to find the distance between 2 points on y-axis? Distance between 2 points on y-axis, if you have to given this is your y-axis 0 1 2 3 4 5. If you have to find the distance between 2 points on y-axis, suppose if you assume that this is your y1 y2, we get y2 minus y1, means y2 is greater than y1. y2 का वैल्यू y1 से ग्रेटर रहना चाहिए। y2 का वैल्यू कितना है 5 minus y1 2 that is equals to 3. Means if you have to find the distance between 2 points on y-axis, that is equals to y2 minus y1. Next is that इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था how to find the distance between 2 points if inclined line is given in this way. Then A have coordinate x1 y1, B have coordinate x2 y2, A have coordinate x1 y1, B have coordinate x2 y2. Then distance of these 2 points AB equals to under root x2 minus x1 it whole square plus y2 minus y1 it whole square. Then distance of this AB equals to under root x2 minus x1 it whole square plus y2 minus y1 it whole square. Then distance between these 2 points, if you have to given 2 points A and B, then how to find? आप यहाँ पे x1 minus x2 भी ले सकते हैं, y1 minus y2 भी ले सकते हैं। इसके पीछे रीजन है उसका स्क्वायर है और स्क्वायर रहने के बाद दैट टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, देन लास्ट इस क्वेश्चन में देखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे फाइंड करने का है. आपका सेकेंड क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव टू गिवन दिस इज योर 3 पॉइंट्स A B C. If you have to given these 3 points and these 3 points are collinear, there are 3 conditions. We can also write this A C B. We can also write this B C
A. Okay, this first condition B lies between A and C. First condition B lies between A and C. Second condition C lies between A and B. Second condition C lies between A and B. Third condition A lies between B and C. Third condition A lies between B and C. Then we write AB plus BC equals to AC. The AB plus BC equals to, then we get AC. AB plus BC, then we get AC. Second condition, AC plus CB, that is equals to AB. AC plus CB, that is equals to AB. AC plus CB, that is equals to AB. And third condition, BA or AB plus AC, that is equals to BC. ओके, अगर आपके ऐसे तीन कंडीशन आए, देन वी कैन से दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए बी, देन फाइंड बी सी, देन फाइंड ए सी. उसमें जो आपका लार्जेस्ट डिस्टेंस रहेगा that is equals to sum of remaining two distance. If it is occurs, then we can say that these 3 points are collinear. Then we can say that these 3 points are collinear. आप यहाँ पे कह सकते हैं कि these 3 points are collinear. क्वेश्चन क्या दिया है था देखो, determine whether the points are collinear. A have coordinate 1, -3, B have coordinate 2, -5, C have coordinate -4, 7. Then step number 1, first find distance of AB. Then step number 2, then find distance of BC. Step number 3, then find distance of AC. And step number 4, if larger distance is equals to sum of remaining two distance, then at that time we can say that these 3 points are कोलिनियर. अभी तक पूरा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, अभी प्रैक्टिकली अभी इसके प्रॉब्लम देखेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट इज दैट फर्स्ट ए कोऑर्डिनेट 1, -3, B have coordinate 2, -5. A have coordinate 1, -3. B have coordinate 2, -5. This is your x1, y1, x2, y2. क्या किया भाई? कुछ भी नहीं किया. फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 एज्यूम किया, सेकेंड को y1, x2, y2. देन AB इक्वल्स टू, आपके पास फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 इट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट स्क्वायर अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 2 माइनस x1 1 प्लस y2 माइनस 5 एंड y1 इट होल स्क्वायर. That is equals to under root 2 minus 1, 1 का स्क्वायर प्लस -5 minus plus it whole square and that is equals to, we write under root 1 का स्क्वायर 1 प्लस -5 plus 3 2 का स्क्वायर. That is equals to under root 1 plus 4, that is equals to under root 5. This is your equation number 1. Equation number 1. क्या किया मैंने? फर्स्ट ए हाउ कोऑर्डिनेट x1 y1, बी हाउ कोऑर्डिनेट x2 y2, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इट होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इट होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू -5, y1 का वैल्यू माइनस प्लस 3. In this way we have find value of AB. Then find BC. Then B have coordinate 2, -5 and C have coordinate -4, 7. अभी इसमें assumption आपको assume करना पड़ेगा.
x1 y1 x2 y2, then distance of BC equals to under root x2 minus x1 eta square plus y2 minus y1 eta square under root. Tell me that what is the value of x2? minus 4 minus 2 minus 4 minus 2 eta square, then y2 7 minus of minus 5 eta square under root minus 4 minus 2 means we get minus 6 का square plus 7 minus minus plus 5 eta square, then under root कितना है 36 plus 7 plus 2 12, then under root 36 plus 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, then we write 144 plus 36 0 1 7 8 1 180, then we write under root 180. Okay, right, under root 180. Then how to find this value? We can also write 9 into 2 18, we can also write 9 into 20. Under root 9 means what? Under root 9 3, under root 9 3, and we get under root 20, then 3 into 20 means what? 4 into 5, और 4 का कितना आता है 2, means we write 3 into 2 under root 5, 3 into 2 6 under root 5. This is your equation number 2. This is your equation number 2. कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है अंडर रूट 180 को मैंने क्या किया है स्प्लिट अप किया है. क्या किया है स्प्लिट अप, क्यों किया है उसका रूट निकलने के लिए मैंने स्प्लिट अप किया है. उसके पीछे रीजन भी कुछ भी नहीं. मैंने फर्स्ट क्या लिखा है 9 into 20, 9 into 20 means what 180. 9 का रूट कितना आता है 3 अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 means what 4 into 5, 4 का कितना आता है 2 means 3 into 2 under root 5, 3 into 2 6 under root 5. This is your equation number 2, means we find AB, then we find BC, then find AC. A coordinate 1 comma minus 3 and C coordinate minus 4 comma 7. Then we get A coordinate this x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, then AC equals to under root x2 minus x1 eta square plus y2 minus y1 eta square under root x2 का स्क्वायर कितना है minus 4 minus 1 its square plus 7 minus of 3 eta square, then we get under root minus 4 minus 5 का स्क्वायर plus 7 this minus minus plus 3 eta square, then we get under root minus 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, minus 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 7 plus 3 10 square, then we get under root 125. then we can also write 25 into 5 और 25 का क्या आता है 5 root 5. this is your equation number 3. अब ये लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना है आपके पास 6 रूट 5. रिमेनिंग टू डिस्टेंस के एडिशन करो रूट 5 5 रूट 5 मीन्स 1 रूट 5 5 रूट 5 मीन्स वी गेट 6 रूट 5 मीन्स वी गेट दिस AB प्लस AC रूट 5 प्लस 5 रूट 5 that is equals to 6 root 5 means AB plus AC. But what is the value of 6 root 5 from 2? BC. From 2 means आपका ये क्या है BC और ये A है. Means we can say that this A lies between B and C. Therefore the point capital A, capital B, capital C are collinear.
आर कोलिनियर. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया था? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर collinear. Then A have coordinate 1 comma minus 3, B have coordinate 2 comma minus 5, C have coordinate minus 4 comma 7, and first find distance of AB, then find distance of BC, then find distance of AC. AB find किया है, BC find किया है, AC find किया है. AB find, BC find, AC find. सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उसका that is equals to the sum of the remaining two value. If it is happens, then we can say that these 3 points are collinear. Then we can say that these 3 points are collinear. And in first problem, this point A comma B comma C are collinear. In first point, this point A comma B comma C are collinear. Okay, in this way completed. You have this first problem is completed. यहाँ पे आपका first question complete होता है. Next is that L have coordinate minus 2 comma 3, M have coordinate 1 comma minus 3, N have coordinate 5 comma 4. Then we write L have minus 2 comma 3, M 1 comma minus 3. Okay. Then if you assume that this is your x1, y1, x2, y2, then L equals to under root. We write x2 minus x1 it square plus y2 minus y1 it square under root. What is the value of x2? x2 1 minus x1 minus 2 it square. y2 minus 3 y1 minus 3 it square. That is equals to under root. अभी देखिए दिस इज योर 1 माइनस ऑफ माइनस 2. 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मीन्स 1 प्लस 2 इट स्क्वायर प्लस माइनस 6 इट स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर मीन्स 36. देन वी गेट 36. 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9. Then we get 9, 5, 45. Then we get under root 45. This is your equation number 1. ये आपका equation number 1 आया है. Then find Mn. Mn equals to, we write, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप under root 45 को 15 into 3 15 into 3 then 3 5 then 3 कितना आता है? 3 under root 5 means we can also write this is your 15 into 3 जो भी कुछ है आपका 15 into 3 means we get 9 into 5. 9 5 are 45. 9 का रूट निकलता है 3 under root 5. Mn फाइंड करो. Mn फाइंड के लिए फर्स्ट M have coordinate 1 comma minus 3 and N have coordinate 5 comma 4. If we assume that this is your x1, y1, x2, y2, then Mn equals to under root x2 minus x1 it square plus y2 minus y1 it square under root x2 5 minus 1 it square y2 4 minus of minus 3 it square under root 5 minus 1 4 square plus minus plus 3 it square. That is equals to under root 4 का स्क्वायर 16 आता है और 4 3 कितना आता है? 7 का स्क्वायर 49. Then we get 49 16 5 1 4 5 6 65 under root 65. This is your equation number 2. And third is that L have coordinate minus 2 comma 3 and N have coordinate 5 comma 4. At that time you can say that this is your x1 y1 x2 y2. Then Ln equals to under root x2 minus x1 it square plus y2 minus y1 it square
अंडर रूट x2 5 minus of -2 its square y2 4 minus 3 its square, and that is equals to under root minus plus means 5 plus 2 its square plus 4 minus 3 कितना आता है 1 का स्क्वायर अंडर रूट 5 plus 2 7 का स्क्वायर देन वी गेट 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना आता है आपके पास 7 का स्क्वायर 49 plus 1 means we get under root 50. This is your equation number 3. If you observe that equation 1, equation 2 and equation 3 सबसे ज़्यादा under root 65 है और second thing is that under root 45 means under root 45 under root 50 आपको इससे ज़्यादा हो रहा है then we can say that this under root 65 which is not equals to under root 45 plus under root 50 means n is not equals to first we write Lm plus third distance Ln. Therefore these points are not collinear ओके ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया वाला ओके